The 9,963rd meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this morning is the situation in the Middle East, including the Palestinian question. I would like to warmly welcome the distinguished ministers and other high-level representatives present in the Security Council chamber. Your presence today underscores the importance of the subject matter under discussion. Before each of you is a list of speakers who have requested to participate in accordance with Rules 37 and 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, as well as the previous practice of the Council in this regard. इस मौके पर मुल्तान मार्की में ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का इनेकाद किया गया। सिटी ट्रैफिक पुलिस की ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल टीम भी मौजूद रही। शुरका को ड्राइविंग लाइसेंस बारे मालूमात फराहम करने के साथ साथ लाइसेंस के मुतल्लिका सहूलियात भी फराहम की गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन सुथरा पंजाब और शहर मुल्तान की ब्यूटिफिकेशन मुहिम के तहत कमिश्नर मुल्तान डिवीजन की हदायत और डायरेक्टर जनरल MGA राना सलीम अहमद खान के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए MGA इन्फोर्समेंट टीम के तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। टीम ने चौक कमहारा, हसनाबाद, सैतलमाड़ी, खाद फैक्ट्री, मुख्तियार शेख अस्पताल चौक, बहावलपुर बाईपास चौक, कासिमपुर कॉलोनी नहर, न्यू शाह कॉलोनी, नादरा ऑफिस, टिम्बर मार्केट, डबल पाठक फ्लाईओवर और अजीज होटल चौक समेत मुतअद्दिद मुकामात से सड़क किनारे कायम तजावज़ात को क्लियर करवा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन सुथरा पंजाब के तहत सफाई में गफलत बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर अमल दरामद जारी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब्दुल रज़ाक डोगर ने अचानक फील्ड विजिट किया। सफाई की सूरत हाल, वेस्ट कलेक्शन और स्टाफ की हाजिरी चेक की। उन्होंने लोधरा की तहसीलों समेत मुख्तलिफ इलाकों में जाकर अवाम से सफाई के हवाले से बराह रास्त राय भी ली। डिवीजनल मैनेजर ऑपरेशन अमरुल हक ने कंट्रैक्टर्स की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। CEO ने कहा कि शहरियों को रिलीफ देने के लिए तमाम मसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। हर सतह पर निगरानी का अमल सख्त कर दिया गया। काम काम और सिर्फ काम के जज्बे से सरशार डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान मैडम उम्मे फरवा हमदानी ने आज सुबह खानेवाल में अचानक दौरे किए। उन्होंने पहले डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस और फिर सेहनतजार खानेवाल का तफसीली मुआयना किया। सनतजार में अफसरान और स्टाफ के साथ मीटिंग में सेंटर वर्क, ऑर्डर वर्क और दीगर बेहतरी से मुतालिक तजावीज़ पर गुफ्तगू हुई। अमली इक़दाम के अहकाम जारी किए गए। बाद सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल की मुख्तलिफ क्लासेस का दौरा किया गया, जहाँ डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उमर ने सरगर्मियों और सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। मैडम उम्मे फरवा ने गेट की खूबसूरती, सफाई, हाजिरी और रिकॉर्ड का जायजा लेते हुए डिप्टी डायरेक्टर की कारकर्दगी की तारीफ की। इस मौका पर फौजिया बरकत और मोहम्मद अली नवाज भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत ज़िला इंतजामिया ने शजरकारी मुहिम का भरपूर आगाज़ कर दिया, जिसका मकसद माहौलियाती आलूदगी का खात्मा और कुदरती आफात से बचाव है। ज़िला महकमे लाखों की तादाद में पौधे लगाएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ज़िला महकमों के इजलास में किया, जहाँ तमाम महकमों को हिदायत दी गई कि मानसून के मौसम को मद्देनजर रखते हुए 14 अगस्त तक अपने मुकर्ररा अहदाफ के मुताबिक शजरकारी मुकम्मल करें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फिनांस मुबश्शिर रहमान ने मुहिम से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। And to promote security, development and stability in their countries. We'll do this by tackling the root causes of the crises while at the same time assisting national governments in their efforts to achieve peace, security and sustainable development. Mr. President, concerning our strategy within the OIC to prevent conflicts and build peace, as well as our fight against poverty, all of this work is based on our on our understanding that there is a close relationship between peace and socio-economic development. We need to tackle conflict's root causes. That is why the OIC supports the UN agenda in terms of fighting against terrorism and violent extremism, intolerance, Islamophobia, stereotypes and incitement to hatred. In this connection, we hail the General Assembly Resolution 76/254 that declared the 15th of March the International Day to Combat Islamophobia. We commend the appointment by the Secretary General of a Special Envoy
envoy to combat Islamophobia. We are ready to fully cooperate with the new special envoy. A military escalation was recently seen in South Asia, and that was following attacks against Pakistan and the Jammu Kashmir in 2025. That reaffirms the following realities. Peace and security in Southern Asia cannot be achieved without a lasting holistic solution to the Jammu and Kashmir conflict in accordance with the Security Council resolutions. Moreover, we commend the ceasefire announced on the 10th of May 2025, and we call for full commitment to implement it, and in favor of bilateral agreements, namely that over the Indus Waters area. We support the UN strategy to fight against terrorism, to take measures to counter the threats, the new threats in the field of terrorism and emerging threats, as well as the incitement to hatred and extremism, and particularly hatred on religious grounds. We call for a fight to be waged against terrorism in all its forms and manifestations. We reject all attempts to link terrorism to a specific ethnic identity, religion, culture, country, or nationality. Mr. President, the Rohingya and the Muslim community in Myanmar remain among the OIC's priorities. It is a very complex challenge, not only for the OIC and the UN. The OIC continues to support the fundamental rights of the Rohingya people, namely the right to a nationality. This is in accordance with the resolutions of the two bodies in this field. We hail the close cooperation between the two parties. In this regard, we express our grave concern at the challenges hampering the voluntary, safe, dignified and sustainable return of Rohingya refugees to Myanmar. We hope that this cooperation can be stepped up to ensure that the high-level conference on the Rohingya is a success. That's scheduled for the 30th of September 2025. Its goal is to step up international efforts to bring about a holistic, just and lasting solution to that crisis. Mr. President, turning now to security challenges, the OIC reiterates the importance of international cooperation to create a nuclear weapons-free zone and one free of other weapons of mass destruction in the Middle East. That's important because it is the first step in bringing about regional and international peace and security. And it's also important to allay fears regarding the nuclear program in our region. So we need to step up efforts under the aegis of the United Nations to guarantee that all countries in the region commit to respecting international law and the NPT for a stable, safe Middle East, and one which is free of the nuclear threat. Mr. President, a meeting is held every 2 years on cooperation between the OIC and the United Nations, the most recent of which was in Astana in Kazakhstan in July 2024. These meetings are effective in terms of identifying areas for partnership and for periodically reviewing cooperation between the two organizations. This bilateral arrangement has strengthened cooperation and the exchange of best practices. The OIC and the United Nations continue this bilateral cooperation in the humanitarian sphere in a very active way. They do this by drawing on the principles and values common to the two organizations as enshrined in their respective charters. The OIC has taken action with a number of UN humanitarian agencies, UNHCR, OCHA, and the OIM. This joint work has been facilitated by the signing of Memorandum of Understandings and joint action plans. Consultations continue with UNDP to establish partnerships. That work has made it